अगर आपके चश्मे हैं तो निकाल सकते हैं। अब हम धीरे से आँखों को बंद कर लीजिए, कंधों को रिलैक्स कर लीजिए और शरीर पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। कल्पना करें कि आप एक शांत एकांत स्थान पर बैठे हैं। तीन गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। अब अपना ध्यान पूरा सांसों पर लीजिए।
da pa da ni sa re 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 ni ni sa re sa ma ga re re sa. Sari ga ma ma ga ga re re sa ni da pa da ni re sa. Lataji, are we continuing with meditation first or the session? लता जी का टेक्निकल इश्यूज आया लगता है नरेश जी। शेखर सर आप ले लीजिए यहाँ से सेशन, आप शेयर करें तो Okay, या ठीक है, I can start the session. Hello everyone. हेलो सर, नमस्ते। Namaste. How are you all doing? गुड गुड सर, थैंक यू। Okay, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. All is going good. So, गुड। first of all, I would just like to say if anybody has any general question, they can ask me before I proceed with the meditation and then the program. Anything in specific in the last couple of weeks? Any question related to meditation? If it's there, it's fine. Otherwise, I'll after 1 minute start the program. Yeah, let's start, Shekhar sir. We can open up the questions maybe in few minutes after the Okay. Okay. So we first start with the meditation part. So everyone try to get in a comfortable position where they can meditate. Try to be in a relaxed position. At the same time, try to have your spine straight. And try to keep your eyes closed. Focus on the voice. It will be a guided meditation, so you don't have to worry about the process of getting into state of meditation. Just follow the instructions and you will feel that very naturally enter the state. Try to connect your stomach region. Feel the effect of the breath. With every inhale, stomach will come out. With every exhale, stomach is going in. This is the primal effect of a proper breath watching or anapanasati practice. If you get any body movements or any thoughts, try to bring your focus back to the breathing.
just being a witness, which is called the Drishta Bhav. If you are doing it properly, you will feel that the thoughts are getting more relaxed, less emotional, just like a process of coming, staying, and leaving. A proper form of meditation is a sleepish, wakeful state where you are feeling sleepy and awake at the same time. State of balance between being alert and being relaxed.
Last 9 minutes. Continue your focus on the breathing with awareness. You're just witnessing and watching your breath. Any thought comes, let them come. Any thought stays, let them stay. Any thought leaves, let them leave. Last 5 minutes. Whatever happens, keep bringing your focus back to the breathing.
Last 3 minutes. Last 1 minute. Entire focus on the breath. Now with the count of 10 to 0, slowly start coming out of the practice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So the meditation part of the session is complete. You can continue to be in this state, or we start with the next part of the session where we discuss about long life and mental peace. This is the prime topic of mental health. So today we have more people. I will just give a brief introduction of myself. My name is Yash Shekhar. I'm an expert on breathwork, mental health, and I'm trying to do sessions for hospitals and clinics all over the world, as well as private institutions and government organizations. I'm India Asia record holder of Breathhold and Padmasan, also called Lotus Posture, and I'm here with the PSSM based groups where Brahmrishi Shri Patri Ji has been an inspiration for us, and we really wish that our extended family grows well, is happy, successful, and learns how to be happy with perspective of inner happiness, which comes through meditation. So thank you everyone to be here. You take it further. Anyone has to say anything or to add any questions, you're welcome before I jump into the topic.
एक क्वेश्चन है शेखर सर, रिलेटेड टू द Sure. मेडिटेशन प्रोसेस. Yeah. सो Okay. अपना भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि कलयुग में केवल नाम स्मरण करते ही बस है. सो जी जी. chanting the name of Lord Vishnu or Lord Shiva is good enough. Krishna. या Yeah. कृष्ण का नाम भी ठीक है, तो कौन सा भी देव 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 का देखिए, नेम. I have myself been a practitioner of Bhakti Yoga for many years. I still do it. ओके. And I know this question is very prevalent that by taking the name of the Lord is enough for Kali Yuga. Well, I don't agree to this perspective. First of all, obviously, taking the name of the God is the best thing to do. It's among the best things. But I feel that you also have a responsibility towards your body and your physical health and mental health, for which this is good, but not, I don't think it's good enough. I think what they meant by this statement is that this is my perspective, that when you take the name of the Lord, that initiates a process inside you, which takes you on the path of self realization, which will again lead to further steps. So when you take the name of the Lord, it's like a mind-based process where the mantra, which can be of any of the deity you take. So like in the case of some organizations, it can be a Lord Vishnu mantra or Krishna mantra, whatever is the mantra you use, with due respect to the Isht Devta or the God whom you're focusing on, your mind gets relaxed and still. And then you get into a state of contemplation, which gets you to know yourself and what steps will help you grow because everyone is unique. We say in that perspective, Hari Ananta, Hari Katha Ananta, which means everyone is a unique representation of God, and their path and their method may be slightly different from the other, or maybe totally different as well. But still, everybody can be on the path, and mantras and bhakti can be the initial methods to clean your mind and then move further on this path. तो जो ये बोलते हैं कि हरि का नाम लेना ही इनफ है, ये उनकी पर्सपेक्टिव है, इनकी सोच है, क्योंकि इनका स्कूल ऑफ थॉट ही भक्ति है. तो इनका मानना है कि भक्ति इनफ है. और अगर भक्ति ही इनफ होती तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान को भी मेंशन किया है, कर्म को भी मेंशन किया है. तो अगर हर कुछ मेंशन है तो हर की अपनी अपनी अहमियत है. और ऑब्वियसली भक्ति बहुत हाई है. आई इनफैक्ट कंसिडर इट टू बी अमंग द हाईएस्ट. So definitely bhakti is very important and it's a start of a beautiful inner journey. But definitely Raj Yoga, which is also mentioned in the Bhagavad Gita, is very important. And breath watching, anapanasati and all are part of Raj Yoga. तो जो फिलॉसफी हमें दी गई है ब्रह्म ऋषि पत्रित जी के द्वारा, वो काफी काफी कारगर है. और आई हैव I'm a big brand ambassador of this particular philosophy of practicing through breath work. क्योंकि ब्रेथ भी एक मंत्र है, ब्रेथ की भी भक्ति हो सकती है कि ब्रेथ के थ्रू आपके बॉडी और माइंड में प्राण का संचार होता है, विच इज प्राणायाम. So breath work is a form of pranayam which provides energy to the mind and body and has very strong scientific basis because the oxygenation level of the blood gets higher, and finally you tend to be more aware of yourself naturally. So I think I've answered your question. Yes, yes, Shekhar sir. Thank you so much. Yeah, my question was, why don't we use name instead of breath? I think you answered my question there. Thank you. We can use that as well. Yeah, we can use that as well. That is also a perspective, that is also a path, and this is also a path. Oh, okay, okay. देखिए, एक मैं कहता हूं कि ये करना है और एक मैं कहता हूं ये ही करना है. So by staying in the second statement, I've taken the freedom of choice. और जनरली सनातन में आपको चॉइसेस पे बहुत स्ट्रांग फोकस है, तो वो भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड. Yeah, ठीक है. तो आप दोनों भी कर सकते हो, और कोई एक कम से कम कोई एक कीजिए
और अगर कर सकते हो तो आप दोनों कीजिए, बहुत अच्छा। बढ़िया है शेखर सर, थैंक यू थैंक मैं खुद दोनों करता हूँ। I yeah, I do bhakti yoga also, and I do Raj Yoga based meditation based practice also. यू सर, थैंक यू या। Yeah. So moving further on the topic, any other question? So team, if you have questions, please raise your hand, or even you can use the chat if you are shy to ask the question too. Yeah, there are a lot of people, so if you feel you can text it to me, I can answer. Because a lot of people I don't think want to ask questions on the general forum. If they have any private question, you can text me here. Otherwise, I can always come back. Yeah, I have a question, sir. Yeah, I please mean, ask. from your introduction, I heard that you are an expert on Reiki and Kundalini yoga and all that, like Yeah, life yes, coaching. So yes. I have a question. How can Reiki help in healing, or how can we help maybe two questions together, how can a young kid practice this Kundalini yoga to help um I mean to help his progress further, not only just not academically, but his growth, even overall growth. Okay. So there are two questions here. So this Right. needs Yeah. a understanding of Reiki and Kundalini Yoga in slightly separate perspective. Mm-hmm. Reiki has its birth in 17th century around that time, and Mikao Usui, Dr. Mikao Usui has been the prime person who has established Reiki. So Reiki is initially a faith healing, which means you use visualization and certain kind Mm-hmm. of initiation practices to enter the path of activating your palm centers in first Okay. step. And it has various levels like level 1, level 2, level 3A, level 3B, mastership and grand mastership. I started my journey long back. By 2001, I was initiated. By 2010, I was a grandmaster. And I was doing traditional Reiki, which is a slower method. So Reiki basically helps to increase your energy flow or pranic flow in the channels, which is the Mm-hmm. nadis. And it at the first level uses the initiation power. At the second and the further level uses the symbols. Okay. So रेकी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो रेकी में आप अपनी एनर्जी को फेथ हीलिंग मतलब विजुअलाइजेशन और भरोसे के बल पे बढ़ाते हो शुरू में, और बाद में जब आप सेशंस करते हो तो आपके चैनल्स और ओपन होते चले जाते हैं। और जब जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो यू टू बी अ हीलर यू फर्स्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेडिटेटर। यू कांट बी अ हीलर एंड नॉट बी अ स्ट्रांग मेडिटेटर। इफ योर मेडिटेशन स्टेट इज नॉट स्ट्रांग, Mm-hmm. healing being a healer will make you weaker and sick. So I Gotcha. know a lot of healers who have become sick because they have not had the strong entropy of pranic state of meditation. देखिए पहली बात तो आप जो भी काम कर रहे होते हो, जब भी आप किसी इंसान से डील कर रहे होते हो, आप या तो उससे एनर्जी ले रहे होते हो या उसको एनर्जी दे रहे होते हो। नो इंटरेक्शन इज अ न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो आप एनर्जी दे रहे हो और आप स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर से भी एनर्जी आपको आ रही होती है। बट अगर आपकी मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है और सामने वाला काफी नेगेटिव स्टेट में है, तो आप डेफिनेटली ड्रेन्ड होगे। इट्स लाइक मैथमेटिक्स। तो रेकी विच इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड कुंडलिनी योगा आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। कुंडलिनी योगा में आपको सिर्फ एनर्जी मिलती है, कोई ड्रेनेज नहीं है उसमें। आप सिर्फ गेन करते हो, आप कम गेन करोगे या ज्यादा गेन करोगे। तो कुंडलिनी योगा में आप सिर्फ चक्रास पे फोकस करते हो। This focus can be audible, which means like auditory based, which is where you are connecting to the sound of the chakras. This can be a visual process where you connect to the form of the chakras. This can be an emotional process where you connect to the feelings of the chakras. Or this can be pranic process where you are focusing on the fires connected to each chakra. तो ये चार तरीके से आप अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। यू फील स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली मेंटली, ऑल्सो फिजिकली एंड इमोशनली। तो कुंडलिनी योगा बहुत सिंपलर प्रोसेस है।
and it can be done, generally should be guided initially, but can be done by yourself as well. लेकिन रेकी या कोई भी हीलिंग जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी आती भी है और जाती भी है। क्योंकि Gotcha. कोई भी हीलिंग का पर्पस एनर्जी देना है। तो इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू समवन, यू मस्ट फर्स्ट हैव इट। एक दुखी इंसान खुशी नहीं दे सकता, एक कमजोर इंसान स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। So for the philosophy of Reiki or any kind of healing modality, especially if it's youngsters concerned, I tell them to first become stronger. You're most welcome to be a healer. We need healers in the world, but not the cost of harming your own health. Because अगर आप हीलर हो, आपकी हेल्थ हल्की भी खराब हो गई, तो आपको रिकवरी डिफिकल्ट पड़ेगी, because your inner faculty is not that developed. So first become a strong Kundalini yoga practitioner and then become a healer. That's a very strong direction and a lifelong direction where you will help everyone. तो मैंने जो पाथ फॉलो किया था, फर्स्ट मेरे केस में भक्ति योग था, फिर अष्टांग योग था, फिर क्रिया कुंडलिनी योग था, एंड देन आई बिकेम अ प्रोफेशनल हीलर। तो मेरी हीलिंग में इनिशिएशन बहुत जल्दी हुई है, लेकिन प्रोफेशनल जो हीलिंग कहते हैं, मैंने जो जो मेडिकल सिस्टम्स और हॉस्पिटल्स का किया है, मैंने अपने आप को काफी स्ट्रांग बनाया मेरी नजर में, और तब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया। एंड आई थिंक इट वाज द राइट अप्रोच, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ केसेस ऑफ healers needing healing, and they're all good healers, not that they have done some mistake. It's just that their process has not been strong enough and they have taken much more difficult case than they can handle. So everyone Got here is a healer here, whoever is joining, and they are all in this kind of work. So I suggest them to handle with care. First, make yourself stronger, and then definitely do healing. It's very good to be a healer. Thank you so much, sir. Thank you so much for your Thank you. explanation. थैंक यू। तो अब हम लॉन्ग लाइफ की बात करें, टॉपिक्स कनेक्टेड है। तो लॉन्ग लाइफ मींस हैविंग अ बेटर फ्लो ऑफ एनर्जी। तो हमें अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। बॉडी, पहले बॉडी है, फिर ब्रेथ है, फिर माइंड है, फिर स्पिरिट है, फिर सोल है। तो बॉडी कैनॉट रीच द माइंड, ब्रेथ कैन रीच द माइंड। तो पहला तो ये है कि आपको अपनी शरीर को स्वस्थ रखना है, राइट काइंड ऑफ फूड, राइट काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विद पीपल अराउंड यू, एंड राइट काइंड ऑफ थॉट्स। पहला तो ये 3 बेसिक है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो जो कहते हैं आहार, आहार मीन्स एवरीथिंग यू ईट, ड्रिंक। देयर इज अनदर क्वेश्चन। Yeah, you can listen to this session. I think Vaishali and others can arrange a YouTube link because they're technical points. So आप अपना आहार, व्यवहार और विचार, which means what you intake, the kind of energy exchange you have with people around you, and the kind of thoughts you have got. These are prime 3 basic level of energies. There are higher ones also, और ये basic है। इससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप पर किसी की नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होगा। दिस क्रिएट्स इनर हैप्पीनेस। इसके आने के बाद आप अपनी ब्रेथ वर्क करते हो और अपनी ब्रेथ के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, एंड दिस इज लाइक अ वेरी पीसफुल स्टेट। ब्रेथ वर्क इज वन ऑफ द वेज टू एंटर मेडिटेशन। द एडवांटेज ऑफ ब्रेथ वर्क इज even if you're not doing it properly, your body gets into a better condition because oxygenation becomes higher. तो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ बिकॉज ऑडियंस थोड़ी हिंदी में भी समझना चाहेगी कि आप अगर ब्रेथ वर्क के थ्रू मेडिटेशन की स्टेट में एंटर करते हो, तो अगर चीजें अच्छी गई तो आप मेडिटेशन की स्टेट में एंटर करते हो और ब्रीदिंग हो गई अच्छी से। अगर अच्छा नहीं गया तो भी ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बढ़ गया। तो यू सी बोथ वेज यू आर गेनिंग। तो इसलिए हम ब्रेथ वर्क को बहुत प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं पत्रित जी की फिलोसफी से बहुत अग्री करता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग अ पर्सन's जर्नी इनटू मेडिटेशन। And having said that, there are other methods as well, which involves visualization, fire ceremonies, and increasing the inner body fires. These are more stronger methods. But before you try stronger methods, your basic has to be strong. Or when you do meditation, your body posture gets stronger and better also. So posture की importance बहुत ज़्यादा है, and posture is not only a physical posture, it's a mental posture. Actually, the word आसन, जो हम कहते हैं यम अष्टांग योग के स्टैंडर्ड्स में यम नियम आसन, तो आसन इज एक्चुअली मीनिंग एटीट्यूड।
एटीट्यूड। तो आप अगर किसी बॉडी पोस्चर में बैठते हो तो आपका एटीट्यूड चेंज करता है। माइंड इज अफेक्टिंग बॉडी, बॉडी इज अफेक्टिंग माइंड। तो लॉन्ग लाइफ के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ राइट अप्रोच ऑफ राइट आसन, right kind of breathing, right kind of energy exchange with the right kind of people, and right kind of thoughts with right kind of food. तो मैंने ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आप सब इसको आज के समय में गूगल भी है, आप सब कुछ रिसर्च कर सकते हो। देर ऑल ऑथेंटिक टेक्निकल पॉइंट्स। Having said that, there are other hidden things. Okay, there's another question. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So, okay. So I'm again on the point कि ये सारे बेसिक्स हैं, ये बहुत एडवांस तक जाती है। प्रॉब्लम आज की स्पिरिचुअलिटी में क्या हो रही है कि हर कोई अलग अलग नजरिए से देख रहा है। तो एलिफेंट एंड द एट ब्लाइंड मैन वाली बात हो जा रही है। किसी ने सूंड पकड़ा है, किसी ने पूंछ पकड़ी है, किसी ने पैर पकड़ा है। सभी सही है, बट सभी के पास पार्शियल ट्रुथ है। What I am telling is all basic points. There are very advanced points as well. Giving respect to those schools and just trying to help people who are doing the basics. तो आप अगर आपके पास एडवांस क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। बट बेसिक्स में थोड़ा बता के फिर वी गो टू एडवांस। तो अष्टांग योग के स्टैंडर्ड लेना बहुत जरूरी है। इट टेल्स द रेफरेंस पॉइंट। यम एंड नियम इज अबाउट व्हाट शुड बी डन इन अ नॉर्मल पर्सन's life, which is like behavior. Asana is attitude and posture. Pranayam is basically life energy work, and breath work is a kind of pranayam. So every breath work is a pranayam, but every pranayam is not a breath work. तो इसमें वैरायटी आती है। देन कम्स प्रत्याहार, विच मीन्स इंटरलाइजेशन ऑफ माइंड, जिसको हम कहते हैं अपने अंदर जाना। इस स्टेट में इंसान डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर वो स्टेट में पहुंच जाए मेडिटेशन के, तो बाहर का एक्सटर्नल साउंड या लोग या लाइट या कोई भी डिस्टर्बेंस उसे अफेक्ट ही नहीं करता। वो अपने अंदर स्टैब्लिश हो जाता है। प्रत्याहार एक अच्छी स्थिति है स्पिरिचुअलिटी की। देन कम्स यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। देन कम्स धारणा। धारणा मीन्स अ हाई स्टेट ऑफ continuous concentration. Then comes dhyan. Dhyan is a state of concentration which is uninterrupted. That means it's effortless. तो ध्यान की अवस्था में आपको सिद्धियां मिलती हैं, मतलब आप एक effortless स्टेट में आते हैं। और ध्यान के बाद है समाधि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे amalgamation, which becomes one with the topic of your focus. ये बहुत ही एडवांस स्टेट होती है। इस स्टेट में आप पल्सलेस और ब्रेथलेस स्टेट में जाते हो। आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हो इस स्टेट में। इसका मिनिमम लेवल महासमाधि है, विच इज यूज टू लीव द बॉडी। एंशियंट टाइम्स में अभी भी ये लोग हैं, महासमाधि करना इज पॉसिबल। और एनीबॉडी गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग ब्रेथ होल्ड्स एंड ऑल कैन डू महासमाधि। बट इसके बहुत एडवांस्ड फॉर्म्स हैं शास्त्रों में और डिफरेंट बुक्स में, वेर यू कैन कम बैक आफ्टर डेथ ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं संकल्पित समाधि या निर्विकल्प समाधि। दे आर ऑल एडवांस्ड फॉर्म्स। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेंशन्स अबाउट दिस थ्रू महाअवतार बाबा जी एंड स्कूल बाय लाहिरी महाशय। वहां पे इसका नाम क्रियायोग नहीं था, कोई और एंशियंट नाम था, विच आई एम नॉट ट्राइंग टू रिवील हियर, बट जनरल पर्पस के लिए हम क्रियायोग ही वर्ड यूज करेंगे। एंड कुंडलिनी योगा क्रिया योगा इज नियरली सेम। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो एडवांस्ड हैं उसमें, बट जेनरिक टॉपिक। तो एवरी काइंड ऑफ क्रिया योग इज अ पार्ट ऑफ कुंडलिनी योगा, बट एवरी काइंड ऑफ कुंडलिनी योगा इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिया योगा। और ओके, we will keep doing these programs, don't worry. Yeah. तो यहाँ तक बेसिक्स है। तो आप लोग ब्रेथ वर्क को सीरियसली करो, उससे लॉन्ग लाइफ है और मेंटल पीस है। मेंटल पीस के लिए एक तो है प्रिंसिपल आपकी जो मैंने अभी तक बताई, ब्रेथ वर्क पे बेस्ड था ये सब, और एक माइंड पे बेस्ड है बहुत बेसिक। ट्राई टू हैव पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स। ह्यूमन ब्रेन कैनॉट प्रोसेस द वर्ड नो। तो अगर आप नो बोलोगे तो वो न्यूट्रल स्टेट में आता है। तो आप बोलते हो हैप्पी, इट गोज टू हैप्पी। यू से नॉट हैप्पी, इट अगेन गोज टू हैप्पी। और अगर आप बोलते हो सैड, इट गोज टू सैडनेस। आप बोलते हो नॉट सैड, इट अगेन गोज टू सैडनेस। So try to use positive words or non-positive words. Avoid negative words. This will help your daily life and it will help you regain from any kind of shocks. I know a lot of questions can come on this point itself, but अब थोड़ा सा contemplation करो और you will feel the difference. Any questions you can post me on Vaishali. She can handle this question or Yeah, yeah, sir. on my Yes. Instagram.
You guys have my Yeah. Instagram ID. Yes, sir. I'll just pronounce it once. YASH followed by SHEKHAR.IN. Vaishali, can you type it for them? If anybody had, if I made a spelling mistake, just Yes, you sir. are there Yes. on me on my Instagram. Yes, Okay. yes. सर फिर से बोलिए आप YASH. YASH. I don't want to share my WhatsApp. I prefer Instagram. Yeah. YASH Mm-hmm. then SHEKHAR.IN. YASH. Yeah. Okay. Then SHEKHRHAR.IN. I'm just typing it once. Okay. सर ये बराबर है? Just a second. Hold for a second. Okay. Yes. बस वैशाली आपने जब टाइप किया तो वाई कैपिटल हो गया, तो इंस्टा में सब कुछ स्मॉल ही होता है. So Okay. that's it. Otherwise Okay. everything is fine. Okay, sir. Yeah. Let me take a screenshot. Yeah. Okay. Yeah. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक्स में बता रहा हूँ आपको, इसमें एडवांस में नहीं आएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो. Look, it's not about it's not about the 10,000 moves you have done once. It's about the one move you have done 10,000 times. तो ये जो पत्री जी की फिलॉसफी थी कि सिंपल रखना है, हमें चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी बेसिक प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए. तो आप अगर इसको ही फॉलो करते हो, और अष्टांग योग का जो प्रिंसिपल्स मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप देम इन माइंड. यू डोंट नीड टू रीडू इट ऑल द टाइम, बट ये इंपॉर्टेंट है. और आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप आपकी संगत इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप महाभारत पढ़ो तो उसमें संवाद है युधिष्ठिर का धर्मराज के साथ. So he's tested when all his brothers drink the water of the lake and fell, they are dead. So has to answer questions to make them come back to life. And one of the questions is, किस चीज की पढ़ाई से इंसान महान बनता है? And the answer is, सिर्फ और सिर्फ संगत से इंसान महान बनता है. आप जिसके साथ एसोसिएट करोगे उसकी एनर्जी आप में आ जाएगी. अगर आप एक साइंटिस्ट के साथ एक महीने बात करो, जस्ट ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट. आप देखो एक महीने बाद आपके वर्ड्स में, सोच में, बिहेवियर में एक साइंटिस्ट का नेचर आ जाएगा. और आप किसी आप चोर के साथ एक महीने बात करो, आप नोटिस करोगे आपके लैंग्वेज में, बिहेवियर में, सोच में उसकी एनर्जी आ जाएगी. दिस वो रियली वर्क्स. तो आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर यू डू, डू विद गुड पीपल. जो एक हिंदी की बहुत अच्छी सेइंग है, गलत काम भी सही लोगों के साथ करना चाहिए. So your action is important, but your association is even more important. तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके फैमिली का, आपकी सोसाइटी का, आपके प्रोफेशनल एक्यूमेंट का या फाइनेंशियल का, ट्राई टू एसोसिएट विद पीपल हु आर गुड इन दैट. दैट्स अ इजियर वे. और नियत की पावर ताकत से ज्यादा है. टीम बनाने के लिए नियत की जरूरत है, ताकत की नहीं. The people around you should be good in their intention. Doesn't matter what they are, how much strength they have. They should have good intention towards you. तो अगर आपको लगता है किसी की आपके प्रति नीयत खराब है, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, उसको तुरंत छोड़ दो. आप कितना भी वो अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कोई मतलब नहीं. कितना भी क्लोज हो रिलेशन में, कोई मतलब नहीं. नीयत अच्छी होनी चाहिए. तो दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक पॉइंट्स विच यू शुड बी क्लियर. और ये दोनों, ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे, मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स बता दिए, इतना भी अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें से कुछ भी, तो आपको लॉन्ग लाइफ और मेंटल पीस, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, उसमें आपको इजी पड़ेगा. We have last 4 minutes left. So I leave it on the organizers to, if there's any question, I'll answer. Yeah, Koti ji, Srilata Yeah. ji. Yeah. एक क्वेश्चन है शेखर सर, Yeah, chat yeah. में I used it in the chat.
So, what are some of the baby steps we can take to practice the breath work? So first baby step for breath work is always trying to be light stomach, which means don't eat too much heavy food, don't eat non-veg, and try to hydrate yourself. Try to do it empty stomach if possible. ये तो पहला स्टेप हो गया. Hmm. Have good sleep. आजकल आजकल क्या हो रहा है, because of work life people are sleeping less. Sleep more. Yes, yes. If your sleep is proper, you will work less hours and be very efficient in your work as well. If you're sleeping less, your inner faculty is not getting a recharge. इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई इन्फेक्शन या वायरस आपको अफेक्ट करेगा तो आपकी इम्यूनिटी उससे फाइट नहीं कर पाएगी. आजकल इतनी तरह की बीमारियां इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोग कम सोते हैं. So your fighting power, the immunity power gets lower. Your sleep and relaxation time is very important if you have to do good breath work. तो एक तो फूड हो गया, एक स्लीप हो गया. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन लाइफ. यू डोंट नीड 100 पीपल इन लाइफ. आजकल जो है इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपके कई लाखों लोग कनेक्टेड है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. यू नीड फ्यू पीपल, एटलीस्ट वन पर्सन जिससे आपका अच्छा कनेक्शन हो. That's why I said कि you don't need जो है कि you don't need 1,000 steps. I don't fear your 1,000 moves which you have done once. I fear your one move which you have done 1,000 times. तो आप कुछ भी कम कम चीजें करो लाइफ में, पर बहुत ही बेहतरीन करो. और आप सोचो आप ईश्वर के लिए कर रहे हो. When I meditate, I try to bring God in the picture. I feel I'm meditating for God. ये मेरा approach है. It's not the only approach, but if I do breath work, I feel I'm offering my breath to God. And that helps me to be more aware. Yeah. This helped me a lot for breaking my record actually. So, Shekhar sir, when it came to food, right, for a long life as well. Yeah. So, Yeah. what proportion do you recommend? Like 25% food, 25% water, and 50%? My favorite is Maad Bhat. Have you guys heard about Maad Bhat? You guys also call it in South India Ganji. Yeah, that's right. It's like it's like boiled water. So I don't think you guys will like my choice, but I mostly am dependent on that. That's my favorite food, especially if I'm alone. I always go for that. So that helps me for faster digestion of the food, and that helps for long hours of meditation. Khichdi is also very good. Dalia, khichdi, all are very good food as per me. There are a lot of good food. Look, having a good friend who is a good cook is icing on the cake. It's a great blessing. Not everybody has it, but thankfully I've had good association in this. People, whoever I meet, they feed me very properly. I don't know how to cook. Let me criticize myself. मेरी cooking skill बहुत ही average है. Only in Denmark I learned how to cook something. और जनरली मैं माड़ भात बना के खुद खा लेता हूँ. Yeah. तो मैं कुकिंग के मामले में बहुत आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा. आई हैव सम अदर फ्रेंड्स हु आर वेरी गुड इन दिस. दे कैन टेल यू 100 रेसिपीज. आई डोंट रिमेम्बर द नेम एज वेल, बट माड़ भात मेरे लिए अच्छा था. और एनीथिंग विच इज हाइड्रेटेड, which Yeah. is easy to make and should not bother you too much. Otherwise, if you're too much bothered about the food, your depth of meditation will not be that good. So, what proportions should be taken in our body, Shekhar sir? Let's say if I am taking 5 chapatis a day, which makes me Yeah, full stomach, do I take yeah. only two at this point, or No, no, 25%? no. Never, never, never. You don't do like that. Never jump from 5 to 2. You have to go from 5 to 4, then 4 to 3, then 3 to 2. Okay, okay. Always baby steps. Most things in life do baby steps. Yes, That's yes. one thing. Second, don't depend so much on chapati. Depend more on uh, food which is easily digestible, and also do some research on what kind of food is suitable for your body. For some people, chapati is suitable, for some people, it's not. So try to study and know your body. The whole purpose of spirituality is to knowing yourself. Yes, yes, yes. Okay, okay. Thank you, Shekhar sir. Yeah, So, team, any other questions? Last minute before we wrap things yeah. up. If there's any question, it will be the last question.
for today's session? Looks like Yeah, no. one last question, sir. Quickly, Yeah, आप एक टिप दे सकते हैं क्या सर, कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ वर्कर या स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर बनने के लिए आप क्या टिप देंगे? देखिए फर्स्ट मैं टू एक बी, ही टिप दूंगा. या हम्म, आई गॉट योर क्वेश्चन. देखिए फॉर बीइंग स्ट्रांग इन दिस फील्ड you have to first be a positive thinker. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर कुछ को लाइफ में पॉजिटिवली लेके चलिए, कुछ भी हुआ लाइफ में. और ये बहुत डिफिकल्ट होता है. इट्स नॉट अ इजी वे, बट पॉजिटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. थैंक यू सो मच सर. या आई हैव अ रिक्वेस्ट कि मेरे को अपना नाम यहाँ पे SHEK चेंज करना चाहिए. तो आई डोंट नो हाउ टू चेंज इट. आई थिंक वैशाली विल हेल्प मी विद दैट. How to change the name, Vaishali? My short name is coming as SHEK here. Okay, okay. I can do that, sir. You can do But that? Okay, yeah, I can. make I it. can. Yeah, पर अभी सेशन खत्म हो रहा है ना, but I can do it. हाँ. No problem. Next So time do I it will do now it, for sir. next. And I will show you how to do it. Perfect. Thank you so much. So I have answered the question that for this you have to like change the perspective in this way. For that's my tip. आप कर सकते हो उसको. आप बस उसको आपको उस पर्सपेक्टिव को लेके चलना पड़ेगा कि आपको अगर अच्छा मेडिटेटर बनना है, अच्छी बेस तो पॉजिटिव थिंकिंग तो फर्स्ट है. क्योंकि आप जहां से भी स्टार्ट करोगे आपसे नीचे भी लोग होंगे, आपसे ऊपर भी होंगे. देयर ऑलवेज पीपल हैप्पियर देन यू एंड सैड कंपेयर टू यू. थैंक यू. ग्लैड यू लाइक्ड इट. Thank you, Shekhar sir. ठीक है. It was a great session. We really enjoy every week when you give us small या tips we can implement I in our try to life. come. Yeah, I try to match you guys timing. Yeah, I'm glad you're liking it, and we'll continue doing it every week at least, if not every 2 weeks. And Certainly, sir. any kind of questions, any kind of stress you guys are going through, do let me know. Don't keep it to yourself. I should not feel guilty that I was not able to be helped at the right time. Okay, this really gives me pain that I come to hear later on that person wanted to reach you but didn't felt there's a right approach. Don't think all this. Just connect to the moderator of the group or reach me directly. I'll try to help. Okay. Certainly, sir. Certainly. So we will reach out to Vaishali ji so ठीक है. she can connect back. Yes. Yeah, she can connect. Yes. ठीक है, everyone. Thank you so much, and Yes, sir. it was great. Yeah, and I'm Yeah, happy. thank you. I really want to thank also. My network was good. I was worried about the network, but everything is good. So, chalo, take care, everyone. Have a very nice day, Yeah, nice evening there, and God bless you all. Thank yeah. you. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Thank you. See you next week. Take Thank you, care. sir. Yes. Yeah, Bye bye, sir. Thank you. Thank you. yeah. Bye.